Hello everyone, welcome to the SBI Securities weekly wrap podcast. First, let's take a look at how the markets have been in the week gone by. तो इंडियन इक्विटी मार्केट्स लगातार तीसरे हफ्ते पॉजिटिव में बंद हुए. सेंसेक्स एंड निफ्टी अगेन क्रॉस्ड लाइफ टाइम हाइज विद द निफ्टी क्रॉसिंग द 26,000 लेवल एंड द सेंसेक्स क्रॉसिंग द 85,000 लेवल. तो इस हफ्ते निफ्टी 1.5% ऊपर बंद हुआ और सेंसेक्स 1.2% पॉजिटिव में क्लोज किया. Broader markets continued to underperform, with the BSE mid-cap index gaining 0.7%, while the small-cap index ended absolutely flat. लार्ज कैप आउटपरफॉर्मेंस का मेन रीज़न है कि रिलेटिवली वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है अगर आप कंपेयर करें मिड एंड स्मॉल कैप से, और इसी वजह से लार्ज कैप्स ने आउटपरफॉर्म किया है नॉट जस्ट ये वीक में बट पूरे सितंबर मंथ में. अगर आप देखें तो लार्ज कैप इंडेक्स ने काफ़ी आउटपरफॉर्म किया है मिड एंड स्मॉल कैप्स को. इस हफ्ते चाइनीज़ सेंट्रल बैंक ने एक बड़ा डिसीजन लिया. तो द चाइनीज़ सेंट्रल बैंक announced a 50 basis points cut in the reserve requirement ratio to encourage domestic consumption and investments in China, which has seen a large slowdown. चाइना का टारगेट है इस साल 2024 का 5% इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट है, जीडीपी ग्रोथ टारगेट, और उसको अचीव करने के लिए ये रेट कट लिया गया है. तो पोस्ट दिस रेट कट द मेटल्स अक्रॉस द बोर्ड फ्रॉम एल्यूमिनियम, कॉपर टू स्टील rallied, and that also led to a rally in the metal stocks in India, with the Nifty Metal Index gaining 7% during the week. Another positive this week was Accenture's fourth quarter result. तो Accenture ने गाइडेंस अपना constant currency revenue का 3 to 6% रखा है नेक्स्ट ईयर के लिए, एंड EPS ग्रोथ का गाइडेंस भी 5 to 8% है. तो नंबर्स काफ़ी अच्छे थे. Accenture के एस्टिमेट्स भी बीट किया, एंड जनरेटिव AI डील्स में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है कंपनी को. तो इसके पीछे इंडियन आईटी स्टॉक्स में भी गुरुवार को थोड़ा पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखाई दिया. Another positive during the week was crude oil, which corrected by 4% towards the end of the week. मेजर ओपेक प्रोड्यूसर सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि वो मार्केट शेयर इंक्रीज़ करने पे फोकस करेगा एंड नॉट ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस. तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एंड स्पेशली फॉर इंडिया विच इज़ अ मेजर कंज्यूमर ऑफ क्रूड. अगर इंस्टीट्यूशनल फंड फ्लोज की बात करें तो FIIs एंड DIIs ने दोनों ने काफ़ी अच्छे अमाउंट्स की बाइंग की. तो FIIs वर बायर्स टू द ट्यून ऑफ 20,469 crores this week, while DIIs net bought 15,963 crores. However, ये बाइंग मार्केट्स को ज़्यादा ऊपर नहीं लेके गई बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ बल्क एंड ब्लॉक डील्स हो रही है. तो प्रमोटर्स लगातार अपना स्टेक बेचते जा रहे हैं. प्राइवेट इक्विटी फंड्स आर पार्शियली सेलिंग देयर स्टेक्स, एंड अभी नेक्स्ट वीक ये साइलेंट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा. तो उसके पहले काफ़ी प्रमोटर सेलिंग देखी गई है. सेकेंड क्वार्टर में ये जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में 40,000 करोड़ जितना प्रमोटर्स ने स्टेक सेल किया है इन अबाउट 180 कंपनीज, एंड दिस नंबर फॉर द Jan to September period this year, that is 2024, has already crossed the 1 lakh crore mark, which is almost more than double of the entire 2023 figure. So promoter buying really has picked up, led by the market rally, as also the enough liquidity in the markets. ग्लोबली इस हफ्ते हैंगसेंग और शंघाई कंपोजिट दो चाइनीज़ इंडेक्स क्लियर आउट परफॉर्मर रहे. तो दोनों इंडेक्स 13% ऊपर थे फॉर द एंटायर वीक. दिस वाज फॉलोइंग द रेट कट बाय द चाइनीज़ सेंट्रल बैंक एंड अदर स्टिमुलस मेजर्स. यूएस के अगर जीडीपी के आंकड़े देखें तो 3% QOQ एनुअलाइज्ड बेसिस पे यूएस जीडीपी ग्रोथ आया इन द सेकेंड क्वार्टर, और ये एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशन से ऊपर था। एक्सपेक्टेशन था 2.9%, तो मार्जिनली आउट परफॉर्म किया। वीकली जॉबलेस क्लेम्स भी और कम हुए, तो वीकली जॉबलेस क्लेम्स फेल टू 218,000 versus expectation of 223,000. And in the previous week also we had seen a figure of 219,000. So the US labor market is showing consistent improvement. अगर इस हफ्ते के वीकली सेक्टरल गेनर्स एंड लूजर्स की बात करें तो मेटल इंडेक्स क्लियर आउट परफॉर्मर है 7.1% गेन के साथ। फिर अदर कमोडिटीज़ तो ऑयल एंड गैस इंडेक्स 6.6% ऊपर था। ऑटो इंडेक्स वाज अप 4.3%. So other than FMCG index, all the indices on the BSE ended in the green, while the BSE FMCG index was a marginal underperformer, ending 0.2% lower. Talking about the weekly gainers and losers on the Nifty 50, so BPCL was the clear outperformer, up 11%. Tata Steel 9.6% up. M&M and Maruti Suzuki among the auto players were up 8 and 7%, while Hindalco also rallied 7.5%. और अगर losers की बात करें तो IT and banks थे, तो LTI Mindtree 4% नीचे बंद हुआ, ICICI Bank 2.5% नीचे बंद हुआ, कोटक बैंक, टाटा कंज्यूमर, L&T भी लूजर्स रहे। कॉरपोरेट डेवलपमेंट्स की बात करें तो प्रताप स्नैक्स में प्रमोटर चेंज होने वाला है। ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड माही मधुसूदन केला ने अनाउंस किया है कि दे विल एक्वायर 46.9% स्टेक इन प्रताप स्नैक्स फॉर 846 crores फ्रॉम द प्राइवेट इक्विटी फंड्स पीक एक्सवी पार्टनर्स एंड सिक्योर कैपिटल। और ये डील होगी 746 रुपीज़ पर शेयर के रेट पे। एडिशनली ओपन ऑफर भी ट्रिगर हुआ है, तो दिस विल ट्रिगर एन ओपन ऑफर एग्रीगेटिंग टू 544 crores फॉर एक्विजिशन ऑफ एडिशनल 26% स्टेक फ्रॉम द पब्लिक शेयर होल्डर्स, and this will be done at 864 rupees per share. So overall Pratap Snacks has seen a promoter change, and the ethnic snacks segment is witnessing quite a bit of activity in recent times. The other stock in focus will be BHEL. The company received an order worth 6,100 crores from NTPC for EPC package of its supercritical thermal power projects. रेलटेल कॉरपोरेशन को 156 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर प्रोजेक्ट्स इन कोकण, पुणे एंड नासिक रीजन्स. Escorts Kubota has received RBI certification for its NBFC arm, that is Escorts Kubota Finance. So Escorts Kubota is looking to set up a captive NBFC subsidiary. अगर इस हफ्ते के मेजर ऑर्डर इन्फ्लोज की बात करें तो L&T को 10,000 से 15,000 करोड़ के रेंज में एक बड़ा ऑर्डर मिला, मल्टीपल ऑर्डर्स मिले इनफैक्ट फ्रॉम इंटरनेशनल क्लाइंट्स. KEC International also received a 1,000 crore order. NBCC India received a 1,260 crore order from Ministry of Health and Family Welfare. Powermech projects को ऑर्डर मिला 227 crores का फ्रॉम GMDC, एंड PSP प्रोजेक्ट्स को भी मल्टीपल ऑर्डर्स मिले, टोटल अबाउट 555 crores. तो ऑर्डर एक्टिविटी भी पिकअप हो रही है. एंड आगे चलते विथ द मॉनसून, पोस्ट मॉनसून एनवायरनमेंट में ये एग्जीक्यूशन भी पिकअप करेगा. Coming to the market outlook for the next week, so plenty of data points will be in focus. The core sector data for the month of August will be released on Monday. 1st October को auto sales numbers आएंगे monthly, as well as the GST collection data आएगा. Manufacturing PMI, services PMI का data भी आएगा. The markets will remain shut on Wednesday on the occasion of Gandhi Jayanti, so it is a truncated week next week. इंडिविजुअल स्टॉक्स फोकस में रहेंगे नेक्स्ट वीक. तो काफ़ी बैंक्स और NBFCs अपना क्वार्टरली बिजनेस अपडेट रिपोर्ट करेंगे, एंड मार्केट्स विल क्लोजली ट्रैक द लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ रेट्स इन Q2.
Additionally, other companies from the non-BFSI space will also report their quarterly and monthly business updates starting next week. So sectors such as real estate, FMCG, logistics, ये सब companies अपने quarterly और monthly updates report करेंगे, तो काफ़ी डेटा पॉइंट्स नेक्स्ट वीक फोकस में रहेंगे. Globally, if you see, the crucial data will be the US non-farm payrolls data, which will be released on Friday for the month of September, and the Chinese PMI data. Since China is in focus, so the growth outlook in the Chinese economy will be out. The Chinese PMI data is a very crucial number, so that will be released. Also, Chinese markets will remain shut for the entire week starting Tuesday for its national holiday. So, Chinese equity markets also will remain shut next week, Tuesday to Friday. So, in that sense, Asian market activity would be relatively subdued. So that's it from the weekly wrap podcast. For key corporate actions in next week, kindly refer to our weekly wrap report. The link to view the report is shared in the description box below. So this was all about the weekly market podcast. Thank you for listening. Have a happy weekend. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.